डिस्कस करिया मॉक टेस्ट 10 फर्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट द स्लेंडरनेस रेशियो रो फार्मूला होची कोन L इफेक्टिव बाय लैम्बडा इफेक्टिव लेंथ बाय लीस्ट लैटरल डायमेंशन तो फर्स्ट फाइंड आउट करो इफेक्टिव लेंथ केते देची क्वेश्चन में 3 मीटर किंतु डायमीटर ऑफ द कॉलम केते देची 300 mm ताले कौन पुट करिवा 3 मीटर को गोटे मीटर जे 1000 mm 3000 divided by 300 lambda বা slenderness ratio ভালা 10 slenderness ratio basis रे कोन हमें केमिति क्राइटेरिया करिवा जदि लेस देन इक्वल टू 3 होला ताको हमें कहबा पेडेस्ट्रियल 3 रु 12 भीतर जदि रहिला ताको हमें कहबा शॉर्ट कॉलम 12 रु जदि अधिक होला दैट इज योर लॉन्ग कॉलम ताले 10 आसुची 10 तो ऑप्शन ए ही मैच करची दैट इज योर शॉर्ट कॉलम तो 3R principle is a concept for 3R principle कहार concept एटा होची वेस्ट मैनेजमेंट रो concept कारण वेस्ट मैनेजमेंट रे 3R रो माने होची कोन R for reduce RRR RRR first R for reduce then reuse then recycle RRR waste management question number 3 estimate the quantity of plastering दे दीजिए फेस ऑफ द वॉल देइछि 5 मीटर लॉन्ग 4 मीटर हाई 30 सेंटीमीटर थिकनेस इग्नोर थिकनेस ऑफ द वॉल थिकनेस ऑफ द फर्स्ट लेंथ देतिला बोथ फेस ऑफ द वॉल ऑफ 5 मीटर लॉन्ग हैला 4 मीटर हाइट हाइट देतिला 4 मीटर बर्तमान 30 सेंटीमीटर थिकनेस दे देछि तो क्वेश्चन में मेंशन करिछि कि हमें कोन करबा थिकनेस को इग्नोर करबा ताले 4 into 5 खाली करबा 4 into 5 that is your 20 meter square बर्तमान प्लास्टरिंग करूछन माने टोटल 2 फेस पय जदी करबा 40 मीटर स्क्वायर आसीबो 40 मीटर स्क्वायर ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 4 a 15 centimeter diameter orifice discharging from a tank uses a jet diameter दे देला 15 centimeter diameter कहार देला orifice रो देला orifice रो diameter तुमको दे देछि माने एमिति गोटे टैंक अछि टैंक रो एठी डिस्चार्ज होची ओरिफिस अछि माने कोन आसीबो गोटे भेना कांटेक्ट आसीबो भेना कांटेक्ट हो सबुठो मिनिमम एरिया ताले कोएफिशिएंट ऑफ द कंट्रैक्शन कोन हे जिवो एरिया ऑफ द भेना कांटेक्ट डिवाइडेड बाय एरिया एरिया तुमको क्वेश्चन में दे देछि कोन ओरिफिस रो एरिया डायमीटर दे देछि ओरिफिस रो 15 सेंटीमीटर तो सेठ हमें एरिया पाई जिवो दैट इज योर पाई बाय 4 इनटू डी स्क्वायर पाई बाय 4 इनटू डी स्क्वायर डायमीटर दे देछि 15 सेंटीमीटर आ जो भेना कांटेक्ट अछि जो जेट जाउची तार डायमीटर देछि 12.75 then coefficient of the contraction will be pi by 4 into 12.75 रो स्क्वायर डिवाइड बाय pi by 4 into orifice रो देछि केते 15 रो स्क्वायर pi by 4 तो कटि गला your answer will be 12.75 divided by 15 रो स्क्वायर केते आउट आंसर 12.75 by 15 रो स्क्वायर केते आछको 0.6146 0.6146 एतिक समस्त नंबर ताले 0.62 722 आछि सर 722 आछि ताले ऑप्शन सी ऑप्शन बी चेक करो ताले 12.75 by 15 रो स्क्वायर 0.722 कंफर्म तो ताले ऑप्शन बी खाली कैलकुलेशन करो
CD ଦେଇଥିବ, CC ଦେଇଥିବ, CV ଦେଇଥିବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରିଲେସନ କଣ? ଚିହ୍ନ ଭିତରେ ରିଲେସନ କଣ? CD, CC ଆଉ CV। coefficient of contraction, coefficient of discharge, coefficient of the venturimeter, कौन रिलेशन तांको भितर? मॉक टेस्ट 10 हेलानी एबे सब आंसर करो, केबे पढिबो? काको जोड़ा नहीं? CD, CC आउ CV। coefficient of the discharge होची coefficient of the velocity बा venturimeter, CD होची coefficient of the discharge जाटा होची venturimeter, CV होची पिटर ट्यूब रो velocity ପାଇଁ, CC होची coefficient of contraction orifice ପାଇଁ। CD is equal to CV into CC। coefficient of the discharge is equal to एटा important एग्जाम रे पढी छि previous year। coefficient of the discharge is equal to coefficient of the velocity into coefficient of the contraction। 5 number, select the option that is appropriate regarding the following two statements labeled assertion ଆଉ reason। assertion कहूची to prevent water logging, intercepting drains can be provided along the course of irrigation canals in place where the percolation of water is detected। जोटी percolation हबार, percolation माने moving of the water to the ground water table, ताको हमें कहते कौन? percolation हैला। ताले assertion ता हमर कोन अछि? intercepting drains हमें इंट्रोड्यूस करिबा, ताले ऑप्शन एटा ठीक अछि, assertion ता ठीक अछि, इंट्रोड्यूस करिबा। तार रीजन होछि कोन? the percolating water is intercepted by drains and the water is carried to the natural water resource। ताले assertion reason दीटा को ठीक अछि, both assertion and reason are true और रीजन भी ठीक अछि जो भी तुम assertion देछि। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी बोथ assertion and reason are true। इंटरसेप्टिंग ड्रेन्स हम यूज करती से जो परकोलेटिंग वाटर को काढिबा पई, कैरिड आउट करिया पई टू द नेचुरल वाटर कोर्स, रिवर मान को छाडिया पई। क्वेश्चन नंबर 6, how is municipal solid waste is classified on the basis of its source? On the basis of the source जदि हमें देखिबा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट क्लासिफिकेशन कोन कोन हे पारे? गोटे होचे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट माने जेमिति हमर बीएमसी हला, भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो सी कोन कोड कोड वेस्ट कलेक्शन करिवो? गोटे होचे घर मानकरू करिवो, दैट इज योर हाउस। आउट होचे रास्ता रु करिवो, आउट होचे इंडस्ट्री मानकरू करिवो, जोटा के हम कोन करन पॉपुलेशन इक्विवेलेंट बाहर करंती इंडस्ट्री रु केते बाहरला विथ रेस्पेक्ट टू डोमेस्टिक। ताले केते प्रकार हे परिवो देखो, हाउस गोटे हम, स्ट्रीट गोटे हम, आउ बिजनेस रो गोटे आसीबो, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द केमिकल कॉम्बिनेशन फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? गोटे होचे जिप्सम, आउट होचे प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम होचे 2H2O CaSO4 कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O होचे तमरो जिप्सम, आ अधा हाफ H2O हेले दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 हाफ H2O। Question number 8, which of the following types of joints is a temporary joint left behind subsequent concreting operation? माने एमान भितरु कोठा होचे गोटे टेम्पोरारी जॉइंट हला, एमान भितरु कोठा होचे गोटे टेम्पोरारी जॉइंट। जॉइंट्स को कोन अछि? कंट्रैक्शन जॉइंट, कंस्ट्रक्शन जॉइंट, एक्सपेंशन जॉइंट। कंट्रैक्शन आ एक्सपेंशन तो परमानेंट हमको दबाको पड़िबो, ता बिना काम होबोनी। गोटे होचे टेम्परेचर वेरिएशन पई डाबल बार प्रोवाइड करिवो, तो एठी टेम्पररी मागिछि माने एक्सपेंशन होबोनी कि तमरो कंट्रैक्शन होबोनी। तले कंस्ट्रक्शन जॉइंट ता होछि गोटे कोन टेम्पररी जॉइंट, ऑप्शन सी। सर 8 नंबर आउथरे थोड़ा रिपीट कर दियंतु ଟିକେ ଜାଣି ହେଲାନି। 8 नंबर कहूछि एमानको भितरु कोटा होछि गोटे टेम्पररी जॉइंट्स, जोड़ा कोन कर छाडी दियो, छाडी देइथाओ तमे। तो आम पाखरे जो भी हम प्रोजेक्ट काम करूचंती, धर गोटे रास्ता तैयारी कले, रास्ता रे कोन कोन जॉइंट आसे? मेन दीटा होछि, गोटे होछि कंट्रैक्शन, आउट होछि एक्सपेंशन। एक्सपेंशन होछि टेम्परेचर वेरिएशन पई, कंट्रैक्शन होछि श्रिंकेज पई।
तो कंट्राक्शन जॉइंट और एक्सपांशन जॉइंट तो तुमरो दबाकू पड़िबो ही पड़िबो सेटा होचे कोन परमानेंट जॉइंट दैट इज योर परमानेंट जॉइंट तो जदि एटी ऑप्शन एलिमिनेशन करबा गोटे होचे कंट्राक्शन तो परमानेंट आसीबो एक्सपांशन आसीबो परमानेंट आउट रहला आइसोलेशन जॉइंट आइसोलेशन माने दीटा को सेपरेट करिया पे आइसोलेट रखिया पे दैट इज आल्सो परमानेंट जॉइंट ताले गोटे ऑप्शन बोलिला दैट इज योर कंस्ट्रक्शन जॉइंट रे किछि भी हे पारे हला कंस्ट्रक्शन जॉइंट होची कोन गुडे टेम्पररी जॉइंट जोड़ा कि तुम दरकार हेले प्लेस दबो दरकार नहले दबो नाही जार कोनसी स्ट्रक्चरल पर्पस नथे निज काम हिसाब रे हम देखा calculate the net area of the tension member consisting of drilled hole diameter देइछि 22 mm to place a bolt of m20 take thickness of the tension member as 10 mm thickness दे देला 10 mm and gross area net section rupture gross section yielding हैला तो फास्ट कौन करबा हम नेट एरिया कैलकुलेशन करबा नेट एरिया केमिति कैलकुलेशन करबा नेट एरिया होची कोन width minus number of the holes into d into thickness that is your net area ताले के नेट एरिया कैलकुलेशन करो b minus n into d naught whole into t तो आगे फास्ट कौन देखियो ग्रॉस एरिया रु जदि हमें माइनस कर देबा होल एरिया देन हमें पाइ जबा नेट एरिया माने एटा होची धर गोटे प्लेट प्लेट रे दीटा होल अछि ताले टोटल प्लेट रो एरिया रु खाली जदि दीटा होल रो एरिया को माइनस कर दोचन त हमें पाइ जबा नेट एरिया क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट फाइंड आउट द नेट एरिया तुमको डायमीटर दे देछि होल रो डायमीटर 22 mm ताले नेट एरिया इक्वल टू केते हे जो ग्रॉस एरिया देछि 1000 mm स्क्वायर तो ग्रॉस एरिया माइनस होल हैला माइनस होल किंतु होल बर्तन कोन अछि देखो b माइनस n into d naught into t करिवे होल बर्तन कोन अछि देखो 1000 रु माइनस करबो केते n into d naught बर्तन से कहउछे टेक द थिकनेस ऑफ द टेंशन मेंबर होउछे 10 mm थिकनेस ऑफ द मेंबर होउछे केते 10 mm ताले d naught हैला तमरो 22 mm थिकनेस होउछे 10 mm ताले एबे काढी परिबो कि नै नेट एरिया केते होउछ को खाली 1000 टू माइनस करबो आ सब क्वेश्चन तुमको दे दिएछि एठी 20 + 2 पकेबे दरकार नै कारण से ऑलरेडी दे दिएछि ड्रिल्ड होल रो डायमीटर होउछे 22 mm 780 780 वाला होल रो एरिया केते भारिबो 22 * 10 एरिया ऑफ द होल केते हे जिवो डायमीटर इनटू थिकनेस 22 * 10 केते 220 220 हेले 1000 रु माइनस कर दबो 220 780 10 number the maximum water cement ratios for plain concrete and reinforced cement concrete under severe exposure condition are severe exposure condition देछि plain concrete आ आरसीसी पई पछाछि concrete technology रो starting part रो अछि टेबल टा जो water cement रेशियो plain पई केते 0.5 आरसीसी पई 0.45 for ता को कंडीशन पई severe exposure condition 11 11 कहूँ कहा पर हमें कौन करिबा फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर बाउंड मेकाडम रोड्स वाटर बाउंड मेकाडम रोड होची कोडा जोडा ग्रावेल और मोरुम फोरुम पका जाय दैट इज योर वाटर बाउंड मेकाडम रोड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन ऑफ स्प्रेडिंग द क्रस्ट एग्रीगेट फास्ट कौन करिवो ड्राई रोलिंग करिवो तापरे वॉइड्स मान को फिल करिवो तापरे वेट रोलिंग करिवो तापरे बाइंडिंग मटेरियल ऐड करिवो फास्ट ड्राई रोलिंग फिलिंग द voids wet rolling spinning तापरे application binding material ऑप्शन ए ऑपरेशन टा मन रखियो फास्ट हो जे ड्राई रोलिंग हैला कारण कोन करिवो फास्ट एग्रीगेट गुडा को स्प्रेड करिके ताको कंपैक्शन करिवो दैट इज योर ड्राई रोलिंग तापरे स्पिनिंग मटेरियल अप्लाई सर एटी करिवो फिलिंग भॉइड कौन सर फास्ट हमें कौन कले ग्राभेल गुडा सब बड़ बड़ पार्टिकल गुडा सब पके देले ग्राभेल बड़ बड़ पार्टिकल पकेके तापर रोलर चढ़ी देले किंतु जो बड़ बड़ पार्टिकल भीतर जो फांका स्थान गुडा रहिला कि नहीं भॉइड्स गोटे चिप्स को आज्ञा आनिकी गोटे बाल्टी चिप्स को आनिकी गोटे एरिया जदि हमें पके दबा
से कौन कंप्लीटली कंपैक्ट हेबे कि तांको भितर वॉइड्स रहइबो कि नहीं फांका स्थान तो से फांका स्थान गुडा को हमें केमिति फिल करबा बाय यूजिंग योर फाइन एग्रीगेट फास्ट हमें कोर्स एग्रीगेट को पके के रोल कर देले ड्राई रोलिंग कर देले तापर हमें कौन करबा जो वॉइड्स गुडा रहि गला ताको ताठो छोटो छोटो साइज एग्रीगेट गुडा को ता ऊपर पके की ताको हमें कौन करबा आउ थरे रोल कर दवा दैट इज अ फिलिंग ऑफ वॉइड्स विथ स्पिनिंग तो करबा तापर हल्का टिके पानी छिंची देकी वेट रोलिंग कर दबा टू अचीव मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी तापर बाइंडिंग मटेरियल अप्लाई कर दबा 12 if Reynolds number is less than 500 the flow is said to be laminar for कहा पई Reynolds number जदि पाइप केस रे देखिबो पाइप केस रे केते less than 2000 पाइप केस रे less than 2000 हेले ताको हम कहबा laminar flow 2000 रु 4000 हेले ताको हम कहबा ट्रांजिशनल फ्लो 4000 रु अधिका हेले ताको हम कहबा टर्बुलेंट फ्लो एटा होचे कहा पई पाइप पई जदि ओसीएफ पई कहबो ओपन चैनल फ्लो पई देन 500 हेले कम हेले दैट इज योर laminar flow 500 to 2000 हेले दैट इज योर ट्रांजिशनल फ्लो 2000 टू अधिक हेले दैट इज योर टर्बुलेंट फ्लो सेमी जदि सॉइल केस रे देखिबा सॉइल रे जो पानी फ्लो करूची Reynolds number जदि लेस देन 1 हेला ताको हम कहबा laminar flow ग्रेटर देन 1 हेले दैट इज योर टर्बुलेंट फ्लो ताले Reynolds number 500 रु कम हेले ताको हम laminar flow कहबा को केस रे फ्लो थ्रू सॉइल ना पाइप ना फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स ना फ्री सरफेस फ्लो एबे हम डिस्कस करले Reynolds नंबर जदि लेस देन 500 होय ताको हम को फ्लो कहबा ओपन चैनल फ्लो ओपन चैनल फ्लो ओपन चैनल फ्लो टा को हम कहबा कि ना फ्री सरफेस फ्लो जहार सरफेस फ्री अछि एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर अछि माने नदी रो फ्लो नदी रो कैनाल रो पानी जो जाउची ताको हम कहबा ओपन चैनल फ्लो पाइप हेले 2000 टू कम हेले दैट इज योर पाइप केस दिस इज योर ऑप्शन डी फ्री सरफेस फ्लो बा ओपन चैनल फ्लो which method is used 13 which method is used for the preparation of detailed estimate एमान भितर कहा को हम यूज करबा for the preparation of detailed estimate को detailed estimate पई cubic content method भी यूज कर परिबा square meter method भी यूज कर परिबा detailed estimate पई plinth area होचे approximate estimate बा rough estimate तो से कोचे एमान भितरु which method is used for the preparation of detailed estimate माने कोडा बेसी सुटेबल पर क्वांटिटी जदि हम बाहर करबा यूनिट क्वांटिटी मेथड दैट इज योर मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर डिटेल्ड एस्टिमेट कारण आमे कोन करंते सितरे काम को सब डिफरेंट डिफरेंट आइटम क्वांटिटी जो सब डिवाइड कर दियंती जहार पर यूनिट रेट हमको जଣା थाए तो सेठो हम टोटल कॉस्ट काढी परिबा थोड़ा इटा आसी 500 इटा आसी गोटे इटार प्राइस है 500 इटार प्राइस कर दैट इज योर डिटेल्ड एस्टिमेट जोटा हमको बेसी सुटेबल यूनिट क्वांटिटी मेथड क्वेश्चन नंबर 14 बे मेथड कौन है बे मेथड होची एक कहबा बे जो स्टोरेज बिल्डिंग दिस इज योर बे मेथड मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग सपोज गोटे स्टोर रो खर्च गोटे स्टोरेज बिल्डिंग रो खर्च होची एति कि दुटा स्टोर हेले एति खर्च आसी दैट इज योर बे मेथड 14 select the option that is appropriate regarding the following two statements label assertion कहूची कोन in lined canals the increased velocity eliminates the possibility of silting in the canal bed तो फास्ट ठीक अछि कि भूल अछि फास्ट कोच जदि हम कैनाल को लाइनिंग कर दबा देन जो वेलोसिटी कोन करिवो सिल्टिंग जो करोथिबो तो इंक्रीज वेलोसिटी एलिमिनेट्स माने जो सिल्टिंग सिल्टिंग माने हो जो कोन सैंड गुडा डिपॉजिट होबा सिल्ट गुडा डिपॉजिट होबा को हम कहबा सिल्टिंग स्काउरिंग माने कोन एडिस फॉर्मेशन होबो दैट इज योर स्काउरिंग ताले जदि हम लाइंड कर दबा देन आउ सिल्टिंग होबो नाही ताले ठीक अछि एटा रीजन कोचे कैनाल लाइनिंग कोन करे प्रोवाइड्स ए स्मूथ एंड स्टेबल सरफेस जहा फल रे से कोन करे फ्लो टा को बढ़ाई दिए वेलोसिटी कोन करिवो पानी रो वेलोसिटी अधिक रहइबो आउ से कोन करे जो भी सिल्टिंग होउचे ताकू से नहीं की पड़ेबो आउ से कोन डिपॉजिट करिया को दबो नाही तले बोथ असर्शन भी ठीक अछि रीजन भी ठीक अछि आउ रीजन ता होचे करेक्ट एक्सप्लेनेशन
देखो वो ऑप्शन मैच करछि बोथ assertion and reason are true r is not ना एटा होबनी false एटा होबनी both assertion reason are true option c both assertion and reason are true and reason is the correct explanation लाइन करया द्वारा हमर फायदा होय कि silting और scouring हमर कमी जाय if the whole circle bearing of a line is 0 degree whole circle bearing हो 0 degree তাহলে reduce bearing of the line केते पचाउछि 0 माने starting from the north ही रहल whole circle bearing माने सबले north to the survey line always in clockwise direction 16 which of the following is not a source of noise pollution एमानक भितरु कोटा गोटे noise pollution लो source नुहे noise pollution लो गोटा source नुहे ऑप्शन देखि जमा पड़ो soft music dhiro music is not a noise pollution common sense question एडा कुछ कुछ अछि तापरे सर्वे रो स्टाफ रीडिंग्स देछि फास्ट को कोन करबो टेबल फॉर्म रे लिखि दबो फॉर इजी कैलकुलेशन फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग रेसिप्रोकल लेबलिंग इज ए डायरेक्ट मेथड ऑफ द लेबलिंग से कोछि वन इंस्ट्रूमेंट स्टेशन नियर पी जेतले पी पाखरे रखिले सेतेबळे रीडिंग होछि केते 1.8 आउ 2.6 जेतले क्यू पाखरे रखिले सेतेबळे रीडिंग होछि केते 1.5 2.4 ताले खाली कोन करिवो माइनस करिकि प्लस करिकि बाय 2 करिवो तो 2.6 minus 1.8 plus 2.4 minus 1.5 divided by 2 केते आछे देखा जति आछे दैट इज योर आंसर रिड्यूस लेवल दे देछि 100 दे देछि 100 दे देछि माने p पॉइंट देछि 100 ताले q पॉइंट केते पचाछि p और q भितर आगे डिफरेंस केते आछला देखो 0.85 आछे डिफरेंस p और p पॉइंट और q पॉइंट भितर डिफरेंस आछला 0.85 ताले ऑलरेडी rl ऑफ ए p पॉइंट दे दी तुमको 100 दे देछि rl ताले एटा कोन करबो 0.85 माइनस कर दो 99.15 आगे टेबल फॉर्म रे सजे के लिखि दबो देन तुम खाली तापर माइनस करियो इजी है मैच द फॉलोइंग फ्लोड कंट्रोल वर्क्स विथ देयर फंक्शन फ्लोड कंट्रोल वर्क आउ तार फंक्शन को माने मैच द फॉलोइंग रे पचाछि फास्ट पचाछि फ्लोड कंट्रोल वर्क्स रे कोन कोन जाउछि गोटे होछि चेक डैम टेरेस बॉन्ड बॉन्ड माने साइड जो बंध दिया जाय हला आउट होछि लीव्स माने जो हम कोन हिडो दिया जाउछि पत्र बंध हला तो फास्ट देखो चेक डैम्स का सो रिलेटेड टू प्रोटेक्ट सराउंडिंग एरिया रिवर और सराउंडिंग एरिया फ्रॉम द फ्लोड का सो रिलेटेड लीव्स रिलेटेड टू रिड्यूस द रन ऑफ वेलोसिटी माने रिलेटेड टू योर डैम आउ जो है दैट इज योर टेरेस बॉन्ड टू अरेस्ट सेडिमेंट्स एंड द सरफेस रन ऑफ इन एग्रीकल्चर लैंड्स दैट इज योर टेरेस बॉन्ड तो ए टू कोटा लीव्स टा होची हमर नदी साइड रे जो बंध दिया जायनी नदी साइड रे तो एटा होची नदी बट ए जो हिडो कोन बंध दिया जाय सो दैट कि जदी बन्या पानी जेमिति नदी रो बाहरी कि न जाय ता कोनती लीव्स बंध जेमिति हमर गोटे जमी रे दियंती लीव्स ताको हम ओडिया रे कोन कोनती हिडो कोनती जेमिति जमी रो जमी पानी बाहर को न जिवे तो सेमिति नदी जेतले फ्लो करिवो देखिबो जेते बळे वर्षा दिन पूर्वरु कोन करिवो वर्षा दिन पूर्वरु कोन करा जाय गां मानकर जो भी नदी रे बन्या बेसी आसे सेतिरे सब जेसीबी आने की ताको खोली की ताको आउ टिके ऊंचा कर दियो दैट इज योर लीव्स सो दैट की टू रिड्यूस द अकरिंग ऑफ द फ्लोड वाटर the terrace pond is related to your agriculture leaves is related to your flood check dams is related to your control runoff velocity a 2 b पड़े जीवो b जीवो 3 c जीवो 1 a 2 b 3 c 1
19. Calculate the volume of earthwork between the two sections 40 meter apart if the mid sectional area between the section mid sectional area तुमको मिड सेक्शनल एरिया तुमको दे देछि डिस्टेंस देछि ताले खाली कोन करिवो एरिया दे देछि डिस्टेंस देछि वॉल्यूम माने मीटर क्यू माने गोटे मीटर आसी 15 * 40 कर दो दैट इज योर आंसर 600 मीटर क्यूब 20. Which of the following statements are correct in chain by tape surveying? The 3, 4, 5 method can be used. 3, 4, 5 method can be used. First हमें कौन करंती 3, 4, 5 मेथड होची कोन हमें तो चेन बा टेप साहाय्य गोटे सर्वे करिबा राइट मान जो ट्रायंगल गुडा हमें एस्टैब्लिश करिबा दैट सेटा होची 3, 4, 5 मेथड ट्रायंगल जो हमें एस्टैब्लिश करिबा हला माने 3, 4, 5 एक हमें कहबा 3, 4, 5 मेथड तो सेटिंग राइट एंगल ट्रायंगल्स पाइथागोरस थ्योरम जोड़ा एप्लीकेबल हे परतो सेटा हमको इजी होबो 3 रो स्क्वायर प्लस 4 रो स्क्वायर इक्वल टू 5 रो स्क्वायर दैट विल बी इजी फॉर अस से बळे जो हमें ट्रायंगल को माने बेसिकली परपेंडिकुलर ट्रायंगल को सेटिंग आउट करबा देखो को ऑप्शन अछि टू सेट आउट कंटूर लाइन टू सेट आउट कंटूर लाइंस एटा होबो की 3, 4, 5 मेथड होची कोन टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन दुई ठीक अछि टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑफसेट 3 ठीक अछि टू रिमूव द 4 होबनी 1 होबनी 2, 3 ऑप्शन सी बुझी पाइलो 3, 4, 5 मेथड माने होची कोन पाइथागोरस जिमिति हम यूज करंती जोडी 3 रो स्क्वायर प्लस 4 रो स्क्वायर इक्वल टू 5 रो स्क्वायर होतो ताको हम कहबो 3, 4, 5 मेथड टू सेटिंग आउट द राइट एंगल 21. In order to have exactly zero tensile stress at one extreme fiber of a solid solid circular section देइछि exactly diameter देइछि d zero tensile stress subjected to combined direct compressive भी अछि direct compressive माने stress upon area और bending माने that is a sigma m upon I is equal to sigma upon y ହେଲା ताको हम को एरिया कोन थोड़ा सर्कुलर पार्ट हे गला ताको हम कहबा कॉर्न एरिया बा स्क्वायर पार्ट हे गला स्क्वायर आसी हम रोम्बस टाइप आसी दैट इज योर कॉर्न एरिया के ई आर एन हैला तो कॉर्न एरिया कोठी आसी थाए सर्कुलर केस रे टोटल जो कॉर्न डायमेंशन आसीबो जोडा हो जो नो टेंशन जोन दैट इज योर d by 4 हैला माने ई जो डायमीटर आसीबो d by 4 माने एत्ते की एरिया होची नो टेंशन जोन ताकन कहबा कॉर्न एरिया चलो सब ऑप्शन देखो बियॉन्ड ए डिस्टेंस ऑफ 3d upon 8 मेजर टुवर्ड्स द कोर फ्रॉम द पेरिफेरी तापर कोच एटा रेडियल डिस्टेंस ऑफ d by 3 रेडियल डिस्टेंस ऑफ d by 6 रेडियल डिस्टेंस ऑफ d by 4 फ्रॉम द सेंटर देखिया आगे सेंटर रु केते होउची एटा होचे कॉन पर्सन जोटा डायमीटर होची केते d by 4 d by 4 हेले सेंटर रु नै कि एउठेती रेडियस केते हे जो d by 8 d by 8 हेले क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट दिस ताले टोटल डायमीटर यदि d हुए टोटल डायमीटर यदि माने एउठु एति कि टोटल यदि d हुए एटा होची सेंटर पर्सन सेंटर पर्सन ताले एउठु एति केते हो पचाछि नॉर्मल पॉइंट लोड इज नीडेड टू बी प्लेस्ड ताले से लोड को हमें को एरिया रे प्लेस करबा नॉर्मल लोड को हमें को एरिया रे प्लेस करबा ताले एउठु एति गेला केते d by 8 टोटल टा एउठु एति केते आधा हे जिवो d by 2 d by 2 minus d by 8 4d minus t that is your 3d upon 8 चलो ऑप्शन ए ठीक अछि 3d upon 8 तापरे रिलेशन पचाछि
linear elastic homogeneous and isotropic material having modulus of rigidity G, modulus of elasticity E, and the range of G is given. Relation use कर परिबो E is equal to 2G whole into 1 plus mu ହେଲା रेंज से पचारे G रो रेंज कोड आसीबो हमें जानछो दे mu रो रेंज होची केते 0 रु नै कि 0.5 दैट इज इंजीनियरिंग पर्पस ପାଇଁ माइनस हे परिबो फॉर ह्यूमन टिश्यू ପାଇଁ माइनस हे परिबो बट इंजीनियरिंग पर्पस ପାଇଁ 0 रु नै कि 0.5 तो जदि हम mu को 0 पुट करछंती ताले E केते आसुची देखो आसुची 2G mu को जदि हम 0 पुट करबा mu को जदि हम 0.5 पुट करछंती ताले E केते आसीबो 2G whole into 1 plus 1 by 2.5 is equal to 2G whole into 3 by 2 2 कटिगला that is 3G हैला ताले E is equal to आसिला गोटे 2G E is equal to आसिला 3G से कहूँ in terms of E G केमिति भेरी करिवो ताले G हे जिवो कोन E by 2 रु नै कि एठी G हे जिवो E by 3 ताले E by 2 रु नै कि E by 3 हे जिवो आंसर ए ऑप्शन मैच कुछ E by 3 रु E by 2 एटा भलो क्वेश्चन नुआ वैरायटी क्वेश्चन The integration constant C1 used in Macaulay method of analysis is obtained by applying dash to the integrated first integral differential equation of given beam elastic curve. तो से फर्स्ट जो इक्वेशन पड़िबो Macaulay इक्वेशन कोन इंटीग्रेशन जो करिक हम बाहर करंती d square y by dx square is equal to m upon ei diagram m upon ei by m हमर जो m by sigma से जो फॉर्मूलाटा m upon i is equal to sigma by y तो से जो m upon ei को गोटे साइड कर दबा e by r जो रहला दैट इज योर d square y by dx square दिस इज योर एक बार कोन करबा इंटीग्रेशन करबा एक बार हम इंटीग्रेशन करबा m होची मोमेंट e होची इलास्टिक मॉडुलस i होची मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बार हम डिफरेंशिएशन करबा दिस इज योर मैकुलेस मेथड ताले ये कोन रिप्रेजेंट करबो स्लोप रिप्रेजेंट करबो देखो कोड ऑप्शन अछि डिफ्लेक्शन होबनी सेफ्टी फैक्टर लोड फैक्टर होबनी स्लोप ताले इंटीग्रेशन कांस्टेंट यूज्ड इन मैकुलेस मेथड फॉर एनालिसिस ऑब्टेन्ड अप्लाइंग स्लोप d square y by dx square is equal to m upon ei 21 in the case of Otterberg limits होछि कोडा एटा consistency limit WSR WP WL liquid limit plastic limit और shrinkage limit कहा भीतर डिफरेंस तो केस ऑफ Otterberg limits तो shrinkage index ISR shrinkage index होछि कोन WP minus WSR WP minus WSR त माने प्लास्टिक लिमिट आउ shrinkage limit भीतर डिफरेंस तो डिफरेंस बिटवीन प्लास्टिक लिमिट एंड shrinkage limit ऑप्शन ए जदि प्लास्टिसिटी पचारिबो दैट इज योर WL आउ WP माने लिक्विड लिमिट आउ प्लास्टिक लिमिट भीतर डिफरेंस को हम कहबा प्लास्टिसिटी इंडेक्स आउ से भला प्लास्टिक लिमिट आउ shrinkage लिमिट भीतर डिफरेंस को हम कहबा shrinkage इंडेक्स 25 in order to allow the seepage water to escape without dislocating the soil particles हम कौन यूज करबा इन्वर्टेड फिल्टर यूज करबा सीट पाइल यूज करि परिबा वर्टिकल कट ऑफ वाल यूज करि परिबा किंबा इन्वर्टेड फिल्टर यूज करि परिबा अपवर्ड फ्लो पाई जो एडवर्स कंडीशन आसीबो ताको रोकियो नै इन्वर्टेड फिल्टर 26 H per IS 3129 the permissible tolerance for the length of finished board permissible tolerance होची plus or minus 6 mm हैला ए तमरो plus or minus 6 mm आसीबो that is your permissible tolerance limit हैला माने होले plus or minus केते रहइबो 5% रहइबो of the board
एटा होचे को केस रे थिकनेस पई विड्थ पई आसीबो प्लस और माइनस 3 तो क्वेश्चन में पचा जे लेंथ पई दैट इज प्लस और माइनस 6 सफनेस रखि दबो जब जोड़ा नै आगु लेंथ पई प्लस और माइनस 6 विड्थ पई प्लस और माइनस 5 हैना ना थिकनेस पई प्लस और माइनस 5 विड्थ पई प्लस और माइनस 3 थिकनेस पई प्लस और माइनस 5 विड्थ पई प्लस और माइनस 3 लेंथ तो लेंथ पचार प्लस और माइनस एमती भी ऑप्शन में किसी देनी 5 आउ 3 विषय मेंशन गोटे अच्छे ऑप्शन में तो 6 ही होगा आंसर 27 in triangulation the point at which astronomical observation for azimuth and the longitude are made by use of Laplace equation is called ताको हमें कहबा कोन Laplace station As for IS 10262, what is the approximate amount of entrapped air to be expected in normal non-air entered? Entrapped air जो air entering cement हमें तैयारी करती, जदि entrapped air रहिला then से workability को बढ़ेबो but strength को कमे दबो. से कोची when 10 mm nominal maximum size of aggregate is used in making concrete. ताले what is the approximate amount of the entrapped air? केते रहबो 1.5% जो परसेंटेज रहबो 1.5%. 29 if a steel column is designed for its stability then the slenderness ratio is defined as the lambda is equal to L effective by least lateral dimension. First question देखिए बोले एटा टी बीम आउ एल बीम रो खाली फॉर्मूला पचारछि गोटे होचे आइसोलेटेड टी बीम आउ तो होचे कंटीन्यूअस टी बीम सेमती एल बीम जेमती टी बीम सेमती एल बीम फास्ट जदि हम देखिबा आइसोलेटेड टी बीम आइसोलेटेड टी बीम आइसोलेटेड टी बीम पाई width of the flange कोन हे जिवो width of the web plus L naught by B plus 4 सेमती एल बीम पाई width of the flange is width of the web plus 0.5 into length of the web 0.5 into L naught 0.5 into L naught by B plus 4 एटी खाली 0.5 गोटे एक्स्ट्रा आसीबो L बीम तो L naught देछि T बीम पचारछि आइसोलेटेड T बीम पचारछि आइसोलेटेड T बीम माने L naught डिवाइड बाय केते हिजबो L naught by B plus 4 plus BW जदि एल बीम पचा थांता देन खाली कोन हेतांता 0.5 एल नॉट हो जायतांता एटा हेतांता आंसर एटा हेतांता एल बीम पाई क्वेश्चन टी बीम कथा पचाछ ऑप्शन में 31 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए नॉन रिटर्न वाल्व फंक्शन होची कोन जे गोटे डायरेक्शन में पानी को फ्लो करेबो ताको हम कोनती नॉन रिटर्न वाल्व गोटे डायरेक्शन में पानी को फ्लो करेबो माने बैकवर्ड आसीबो नाही बैकवर्ड आसीबो नाही allow the flow liquid in one direction option A 32 select the option that is appropriate regarding the following two station labeled assertion coaching the volume of water stored in a reservoir between the normal pool level and the maximum pool level is known as the surcharge storage तो एटा ठीक अछि कि भूल अछि को भूल अछि नेक्स्ट भूल अछि नॉर्मल ताले को हम कोन कहबा नॉर्मल पूल लेवल ठीक अछि हम कोन कहबे ताले नॉर्मल पूल लेवल और मैक्सिमम पूल लेवल को यदि पानी रहिला मैक्सिमम तो हम केबे रखिबानी हम सब नॉर्मल पूल लेवल मेंटेन करबा मैक्सिमम माने ताठू ऊपर तो फेल हे जिवो ता माने नॉर्मल पूल लेवल ऊपर जहां भी रहिला सेटा सब शॉर्ट चार्ज जिवो कि नहीं ताको हम कोन करि परिबा एक्स्ट्रा रिमूव करि परिबा कारण जदि अधिका पानी आस्ता तो फ्लड हे जिवो तमे कोन करबा नॉर्मल पूल लेवल ऊपर
जेते भी एक्स्ट्रा रहिला ताको हम सरचार्ज ही कहबा ताले ऑप्शन जो आसोसन टा ठीक अछि ताको हम सरचार्ज कहबा रीजन कहूँ surcharge storage is mainly to detain the flowed water so that it does not cause injury on the downstream side. रीजन भी कौन अच्छे ठीक अच्छे नॉर्मल पूल लेवल ऊपर रीजन टा जहाँ भी बुझी रहला ताको हेलानी हम सर surcharge कहबा स्टेटमेंट कहूँ surcharge हमें कहाँ को कहबा रीजन कहूँ फास्ट तो कहला surcharge कहाँ को कहबा ऑप्शन आसोसन कहला रीजन कहूँ surcharge storage is mainly कौन पाई रखा जाए is mainly to detain the flowed water so that it does not cause any danger on the downstream side. Surcharge तमे कौन पे रखिबो so that कि एका थरे पानी न छाड़ी की धीरे धीरे छाड़िबो जेमिति डाउनस्ट्रीम साइड रे फ्लड रो आशंका न रहिबो ताले रीजन भी ठीक अछि कि यस सर नहीं नेक्स्ट 33 in a hydraulic jump occurring in a horizontal rectangular channel the sequent depth 0.25 1.25 energy loss ଦେଇଛି energy loss ର direct formula apply କରିବ y2 minus y1 ର whole cube divided by 4 into y1 into y2 क्वेश्चन तुमको y1 ଦେଇଛି y2 ଦେଇଛି ମାନେ 1.25 minus 0.25 1 ର cube divided by 4 into 1.25 into 0.25 होची आंसर इंपोर्टेंट होची फार्मूला यदि फार्मूला जଣା अछि ये क्वेश्चन इजी An abstract of estimated cost is prepared after obtaining the cost of each individual item of work and then adding them all together. This estimated cost is increased by 5% to account for any unforeseen expenses, which are referred to as contingencies. Contingency हम कौन कहबा यदि increase करी गला due to unforeseen expenses ताको हम कहबा contingencies. The process that uses reclamation of saline soil in which agricultural land is flooded with water to a depth of about 20 to 30 centimeter is known as soil जदि हेई जाइछि बा saline जदि गोटे soil ले हेई जाइछि ताको हम केमिति माने recover करिवा लीचिंग प्रोसेस द्वारा लीचिंग माने गोटे एक्स्ट्रा पानी ऐड करिवा सो दैट कि टॉप सॉइल टा धोई हेकी पळेबो ऑप्शन बी 36 Which of the following statements are correct with respect to Mohr-Coulomb failure criteria on soil? 36 को कोड़ा हो Mohr-Coulomb criteria कोची Mohr-Coulomb criteria कौन थिला failure criteria of soil Mohr failure envelope shear strength maximum पाइबो sigma 1 minus sigma 3 by 2 shear maximum shear stress जहा जोड़ा हो जो समर shear strength of the soil that is equal to your Mohr circle radius सहित बराबर हो sigma 1 minus sigma 3 by 2 phi होची angle of the internal friction alpha होची angle of repose theta c होची critical angle 45 degree minus pi by 2 सब स्टेटमेंट को पढ़ो फर्स्ट स्टेटमेंट कौन कहूची Mohr failure envelope is approximated as a straight line but in actual ठीक होइला Mohr failure envelope होची गोटे लाइन but actually जदी देखिबो सेटा गोटे कोन आसे गोटे कर्व आसे ताले फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक होची सेकंड कहूची Mohr failure envelope is approximated जदी फर्स्ट ठीक है दुटा भूल तीन कहूची तो Mohr circle drawn for soil cannot cross Mohr failure cannot cross ताको tangent ही होबो एटा होची मैक्सिमम वैल्यू
The Mohr circle drawn for soil cannot cross the Mohr failure envelope. Mohr failure envelope is maximum. Soil तक कौन हो जो Mohr circle तक tangent ही होबो. तो 3 ठीक अछि 1 ठीक अछि 2 भूल अछि. ऑप्शन देखि एलिमेंट कर दियो 2 तो कटि जीवो 1 ठीक 3 ठीक 2 वैल्यू कटि गला 1 और 4 चारटा देखो. कोहेशन होचे C, angle of internal friction होचे high, are functional properties of soil and are independent of testing condition. भूल अछि. C5 depend करे testing condition ऊपर whether it is drained or whether it is undrained. C5 होचोंते shear strength parameter. चारि प्रकार से हम टेस्ट अछि CD, CU, UU, UD. चारि प्रकार टेस्ट अछि हमर. टेस्ट कंडीशन पर डिपेंड करे से कोची इंडिपेंडेंट. तो 1 और 3 खाली ठीक अछि. For a semicircular plate of diameter D and radius R with Y as the vertical axis passing through the diameter. Y होची vertical axis, X होची horizontal axis. ताले इटा है जो CG point जोड़ी joint ना that is your CG point. Passing through the diameter and the moment of inertia about the y-axis. Moment of inertia about the y-axis पचाउची. Moment of inertia is equal to semicircle अछि. यदि पूरा circle थांता then moment of the inertia केते हितांता pi d4 by 64 बा pi by 64 into d4 जेतु semicircle अछि. Semicircle रे I कोन हो जिवो I माने कोडा एटा ए पॉइंट रे ए लाइन रे I हो जिवो सेमिसार्कल माने पाई बाय 64 into d4 ता आउरी अधा हे जिवो माने पाई बाय 128 into d4 पाई बाय 128 into d4 तार पुनी हमको सीजी रे दरकार सीजी माने कोन करबा ixx हे जिवो पाई बाय 128 into d4 plus a into x square से जो डिस्टेंस है जो a into x square हैला तो सेमिसार्कल ले मन रखिबो पाई d4 बाय 128 ऑप्शन डी. Which of the following statements about the circular shear section is incorrect? Circular shear line. Shear line सबुठ बेस्ट होची egg shaped shear. Egg shaped shear रे हमर self pinching velocity हमें भलो पाई थांती. से कोचे कोडा incorrect पचाची कोडा भूल. First कोचे under the flow condition a circular shear has the maximum hydraulic radius. ठीक होची एटा maximum hydraulic radius पाइबा circular पाई. Hydraulic radius is equal to कौन? हाइड्रोलिक रेडियस का ऊपर डिपेंड करे आर वैल्यू पेरीमीटर ऊपर डिपेंड करे ताले सर्कुलर केस रे में मैक्सिमम हाइड्रोलिक रेडियस पाए सर्कुलर शियर्स आर इजी टू कंस्ट्रक्ट सर्कुलर शियर्स आर इजी टू कंस्ट्रक्ट जदि एग शेप्ड करिवो सेटा डिफिकल्ट होबो कंस्ट्रक्शन पई पर सर्कुलर होची इजी टू कंस्ट्रक्ट कारण सेंटर गोटे रहबो रेडियस सब सेम रहबो किंतु एग शेप्ड हेले तुमको दीटा अलग अलग सर्कल को जॉइन करे पई पड़िबो. नेक्स्ट कोच इट हैज लो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी तापर कोच इट ऑफर्स द मैक्सिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर द अमाउंट ऑफ मटेरियल्स यूज्ड. ए ठीक अछि बी ठीक अछि डी ठीक अछि सी भूल अछि. इट हैज लो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी देछि. सर्कुलर शियर माने गोटे पाइप पाइप रो स्टेबिलिटी भलो रहबो तो सेटा ऑप्शन सी रो आंसर. 39. Select the option that is appropriate regarding the following two statements label. ESC रो क्वेश्चन गुडा बहुत ए टेस्ट सीरीज रे पड़ी अछि. असर्शन रीजन ESC रो शॉर्ट क्वेश्चन गुडा पड़ी अछि. तो एडा सब माइंड डेवलपमेंट बाय बहुत भलो भलो क्वेश्चन. कॉन्सेप्चुअल क्लियर करिया पे बहुत भलो क्वेश्चन. The main disadvantage of drip irrigation is requirement for a high initial investment. ड्रिप इरिगेशन ले कौन दरकार ड्रिप इरिगेशन लो सबुठ भलो एफिशिएंसी पाइबो बट पाइपिंग वगैरह कॉस्ट अधिक पड़े आसीबो तो मेन डिसएडवांटेज ऑफ ड्रिप इरिगेशन इज रिक्वायरमेंट फॉर एटा ठीक अछि आसोसन ठीक अछि. रीजन कोच ड्रिप इरिगेशन रिक्वायर्स रेगुलर फ्लशिंग एंड सुपरवाइजन. ड्रिप इरिगेशन ले जेहेतु हमको सब बळे बारंबार चेकिंग करा पय पड़े
सेथि पाई ड्रिप इरिगेशन सेथि पाई कारण इंस्टॉलेशन ही कॉस्टली ना कि सुपरवाइजन कॉस्टली ताले आसरसन ठीक अछि रीजन भी ठीक अछि किंतु एक्सप्लेनेशन टा ठीक नहीं आसरसन ठीक अछि रीजन भी ठीक अछि किंतु एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं खाली सुपरवाइजन पाई कॉस्टली हो जाएनी पाइप वगैरह किणी के आनिबो ताको लेआउट करिवो से सब कॉस्टली 40 एज पर IRC standards an octagon with border এটা তো স্টপ সিগন্যাল দাও octagonal অপশন ডি एज फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एटा को रखियो नोट्स रे एटा भी गोटे क्वेश्चन हे पारे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट केबे आस्थिला एज फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 व्हाट आर द परमिटेड नॉइज लिमिट्स फॉर साइलेंस जोन माने गोटे होचे डे टाइम और होचे नाइट टाइम सीरियली मन रख दबो बडो नै के सानो कमरे डे टाइम 75 75 70 65 55 55 45 50 40 इंडस्ट्री कमर्शियल रेसिडेंशियल साइलेंस जोन तो साइलेंस जोन रे डे टाइम पचाची 50 हे जो तुम आंसर 50 और 40 50 और 40 पांच पर ऑप्शन ए डे टाइम होबो 50 सीरियली मन दो या पे तो क्वेश्चन सब बड़े आसे इंडस्ट्रियल कमर्शियल रेसिडेंशियल साइलेंस जोन 42 which of the following hydrocarbons has the lowest carbon content एमान भितरु कहार सबुठु लोएस्ट कार्बन कंटेंट थाए CH4 मीथेन the mean depth is calculated by dash the depth of two consecutive section mean depth हमें केमे कैलकुलेट करा एवरेज कर co apparatus is used to determine the temperature susceptibility of the bitumen temperature susceptibility पाई हमें यूज करती जो रिंग एंड बॉल apparatus दीटा बॉल रिंग बॉल यूज करती पेंस्की मार्टिन पाई टेस्ट का पाई करबा पेंस्की मार्टिन apparatus टा को टेस्ट पाई बा का पाई क्लास एंड फायर कॉन्टेस्ट आगुर क्वेश्चन पड़छि मॉक टेस्ट which of the following estimate is done account the cost required to keep the built structure in working and safe condition कौन करिवा वर्किंग आउ सेफ कंडीशन रे रखिया पे ताको मेंटेन करिवा रिपेयर करिवा दैट इज योर रिपेयर एंड मेंटेनेंस नेक्स्ट 46 46 कोची if the velocity of flow of water through the soil is 0.01 centimeter per second and the piezometer readings ଦେଇଛି at the end screen visible Yes, sir. if the velocity of flow of water through the soil is velocity ଦେଇଛି 0.01 centimeter per second and the piezometer readings at the ends A and B of soil samples are 10 centimeter out of 5 centimeter the distance between the points A and B होजे 20 centimeter find the coefficient of permeability coefficient of the permeability माने K ର value पचारछि डार्सी लॉ अप्लाई कर परिबो डार्सी लॉ कौन कहूँ फॉर लामिनार होमोजिनियस और सैचुरेटेड फ्लो V is directly proportional to I तो V is equal to KI बा Q is equal to K into I into A तुमको डिस्टेंस दे दी क्वेश्चन रे परमेबिलिटी पचारछि K रो भलो तुम जा करबो को फॉर्मूला यूज करबे Q के अप्लाई कर परिबो
Q is equal to KIA apply कर परिबो एरिया देछि देखो वेलोसिटी माने v देदेला हेड लॉस निहाती देइथिबो हेड लॉस केते हबो पिजोमीटर रीडिंग दे देछि a पॉइंट और b पॉइंट रे 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर v is directly proportional to I तो v is equal to k is equal to v upon I वेलोसिटी देछि हमको खाली I काढिबार अछि I is equal to कोन h upon l I होछि हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट दैट इज योर h upon l h होछि कोन हेड लॉस ड्यूरिंग द मूविंग ऑफ लेंथ l माने l लेंथ जिबा द्वारा केते हेड लॉस हैला पिजोमीटर रीडिंग देछि देखो at the end of points A and B of a soil sample गोटे end होछि A point गोटे end होछि B point केते हेछि देखो 10 सेंटीमीटर थिला स्टार्टिंग रे तापरे एंडिंग रे हला 5 सेंटीमीटर ताले लॉस केते हला हेड लॉस 10 माइनस 5 जे 5 लेंथ होछि केते देछि 20 देछि ताले एठु केते I पाइ जबा दैट इज योर 5/20 I पाइ गलो ताले k is equal to velocity देछि 0.01 divided by into 20/5 is your answer 0.2 by 5 0.04 centimeter per second 47 according to the Mohr-Coulomb failure criteria in soil which of the following statements are incorrect कोटा एमान होते भूल shear strength is attribute to the interlocking of soil particles and cohesion माने shear strength ता होची c आउ phi पाई c होची cohesion phi होची internal friction हैला incorrect पचाची ए तो ठीक अछि b कहूची shear strength is only attribute to the internal friction shear strength खाली phi पे आसी थाए माने b भूल अछि the y intercept represents the friction of soil y intercept माने होची कोन y is equal to mx plus c shear strength is equal to c plus sigma n into tan phi तर एको जमे रिलेट करिवा सिग्मा n हमर कोठी आसे एक्चुअली नॉर्मल स्ट्रेस आसे x एक्सिस रे y एक्सिस रे आसे shear स्ट्रेस ना तो एठु हम जो बाहर करंती tan phi धर एटा वाला phi c plus same situation y is equal to mx plus c y is equal to माने एटा हे गला हमर n सिग्मा n टा हे गला हमर x mx plus c c टा हे गला हमर कांस्टेंट दैट इज योर कोहेशन ताले से कहछ y इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट्स फ्रिक्शन ऑफ सॉइल ताले एटा भूल अछि कि नै फ्रिक्शन ऑफ सॉइल होछ कोन स्लोप ना कि y इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट कोन शो करिवो शियर स्ट्रेस शो करिवो बा शियर स्ट्रेंथ शो करिवो ताले d भूल अछि c भूल अछि b भूल अछि c भूल अछि मोहर कुलम फेल्योर एनवलप इज ए स्ट्रेट लाइन पूर्व क्वेश्चन देखि के आसले जे मोहर फेल्योर कुलम एक्चुअली मोहर फेल्योर एनवलप टा एक्चुअली होजे कर्व नॉट स्ट्रेट लाइन हैला एक्चुअली कोन आस्ताय कर्व आसीताय बट आमे तो रिप्रेजेंट कोन ताको स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कोन बट प्रैक्टिकली सेटा कर्व आसीताय ताले ऑप्शन बी आ ऑप्शन सी ही केवल भूल अछि Which property of borosilicate glass makes it suitable for thermal shock resistance? Borosilicate glass रो को property एको thermal shock resistance provide करता है thermal माने temperature पाई low thermal expansion coefficient alpha रे value यार बहुत कम ये तो expand करे नहीं हैला तो ऑप्शन डी है जो आंसर so that borosilicate कोन एते शीघ्र फायर कैच करे नहीं alpha रे value बहुत कम in a soil's three-phase system constitute of soil are
थ्री फेज सिस्टम माने कौन एयर रहिबो वाटर रहिबो आ सॉलिड्स रहिबो तीनटा पार्ट रहिबो एयर वाटर और सॉलिड shear stress at a point in a liquid is found to be shear stress दिला tau दे देला velocity gradient at this point velocity gradient माने du upon dy दे देला du upon dy दे देला what is the viscosity पचारछि न्यूटन्स लॉ पके दो shear stress is equal to mu viscosity into du upon dy तो mu खाली केते पचारछि तो mu हे जिवो केते 0.02 divided by 0.3 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर बा 1 पॉइज पॉइज रे पचारछि पॉइज माने कोन डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर 51 इन ए सर्कुलर ट्यूब ऑफ डायमीटर देछि 100 mm लेंथ देछि 15 मीटर लामिनार फ्लो होछि डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर इज एस्टिमेटेड टू बी f दे देछि कैलकुलेट रिनोल्ड्स नंबर पचारछि रिनोल्ड्स नंबर होछि लामिनार फ्लो केस रे कोन हो 64 अपन आरी 64 अपन आरी एफ रो वैल्यू हो जिवो 64 अपन आरी तो रिनोल्ड्स नंबर हो जिवो 64 अपन एफ हैला सब डाटा दे देला 64 अपन एफ दे देला बर्तन एफ क्वेश्चन ले डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर दे देला एबे खाली सिंपल होला बात करी केते होछि केते होछि रिनोल्ड्स नंबर 64 by 0.05 1280 तो सर, वैल्यू केते 1280 1280। 52 find the effective length of an isolated cantilever beam where the length from the free end to the face of the support is 1 meter and the effective depth of the beam was 400 mm and the width of the support is 300 mm width ଦେଇଛି depth ଦେଇଛି ତ ଆगे କଣ କରିବ ମିନିମम ଫର୍ମୁଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିବ L ଇଫେକ୍ଟିଭ ର ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ଲସ୍ width ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ଲସ୍ depth ମାନେ effective length is equal to minimum of L naught plus width L naught plus depth केते आछि 1 दे देछि माने गोटे कोन करबो गोटे 400 mm देछि गोटे 300 mm देछि मिनिमम नबो केते आसीबन आंसर 1.1 L नॉट तुमको 1 दे देछि डेप्थ तुमको 400 mm दे देछि माने 0.4 मीटर हे गला 1.2 तापर तुम कोन करिवो L इफेक्टिव रो फॉर्मूला पुट करिवो बर्तन बीम तुमको कोन देछि if the effective length isolated cantilever देछि cantilever देछि माने कोन करिवो d/2 पुट करिवो cantilever देछि माने सिंपली सपोर्ट देथिले खाली d पुट करथन L इफेक्टिव हे जिवो L नॉट प्लस d/2 तो L नॉट माने 1 1 प्लस d केते हला 0.4 मीटर बाय 2 1.2 मीटर 53 As per IRC, what is the carriageway width of a single lane road with raised curve? যদি with curve হলো that is your 3.75 without হেলে 3.5 single lane ଦେଇଛି 2 lane ଦେଲେ 7 54 in a sieve analysis total weight of soil କେତେ total ନେଇଥିଲ 500 ग्राम the mass of the soil returned over 4.75 ଉପରେ ରହିଗଲା କେତେ 100 ग्राम ରହିଗଲା ତାହେଲେ ପାସ୍ କଲା କେତେ 400 ଗ୍ରାम 400 ग्राम पास कला 100 ग्राम रहीगला
तापर अगेन पुणी मास रिटर्न ओवर 2 mm ता तले आसला 2 mm 2 mm रे केते रहिला 150 ग्राम रहिला ताले पास कला केते 250 ग्राम पास कला and the mass returned over 425 micron sheet was 200 gram ताले पास कला केते 50 ग्राम the effective size of the soil effective size माने question is asking about कहा विषय रे पचाउछि क्वेश्चन इफेक्टिव साइज कहा कुआ जाय सॉइल रो D60 by D10 कथा पच D10 पचाउछि D60 कोड आसी Sir, D10. क्वेश्चन कोन पचाउछि कि यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट क्वेश्चन यूनिफॉर्मिटी नहीं कोएफिशिएंट सर पचाले दैट इज योर D60 by D10 तो नहीं D10 हमको काढिबा D10 ला माने होछि कोन द डायमीटर ऑफ द पार्टिकल बिलो व्हिच 10% of the soil particles by weight is final ताल देखो आगे समस्त को परसेंटेज फाइनल बाहर करो तो आगे फास्ट 4.75 mm रो देखो केते पास कला 400 ग्राम नेइथिलो केते 500 ग्राम ताले परसेंटेज केते पास कला देखो 400 बाई 500 into 100 80% हमको दरकार 10% कोठी आसुची तापरे 2 mm रे देखो 2 mm रे 250 पास कला नेइथिलो केते 50 ताले केते परसेंटेज हला 50% हला ताले आंसर 425 माइक्रोन नो आंसर 425 माइक्रोन 50 बाई 500 into 100 ऑप्शन ए in labeling dash is also called minus side in labeling dash is also called minus side कहा को हमें कहबा minus side लेबलिंग कला बेले हमें फोर्थ साइड को सबले माइनस करबा कि नहीं फोर्थ साइड हो कि इंटरमीडिएट बैक साइड कोन करबा आगे प्लस करबा बेंचमार्क प्लस बैक साइड इक्वल टू हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट तापर हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर्थ साइड तापर बाहर करबा कोन न्यू आरएल तो फोर्थ साइड माने लास्ट पॉइंट हला लास्ट पॉइंट इंस्ट्रूमेंट चेंज करिया पूर्व किमा काम सारिया पूर्व तो फोर्थ साइड को ही हमें कहबा माइनस साइड which of the following statements about sanitary landfill is incorrect हम sanitary landfill माने हम जो पोतंती डिक को जो कंपोस्टिंग करंती sanitary landfill एमान भितर कोटा से कोचे भूल another name of sanitary landfill is controlling tipping ठीक हो सेटा waste is stabilized by the aerobic process alone ये तो एउठु जणा पहुचीटा भूल बोली एलोन नहीं हैला एरोबिक भी हे परिबो अनारोबिक भी हे परिबो विथ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन if the water table reaches to the ground level the unit weight of the soil for bearing capacity calculation is taken as water table जदी reach कला up to the ground level ता हम कोन कहबा submerged unit weight soil टा पानी रे पूरा बुडी को अछि submerged unit weight gamma submerged is equal to gamma saturated minus gamma double which of the following not the remedial measure to prevent water hammer through pipes water hammer माने जदि हम गोटे valve को suddenly close कर दबा ताले कोन होबो पानी हठात जेतले बंद होई जिवो से पछु को बहुत जोरे फेरी आसीबो तो सियासी कोन होबो पाइप रे पिटी होबो ताको हम कोनते वाटर हैमर इफेक्ट तो सब ऑप्शन को देखो ऑप्शन बी सर ऑप्शन बी को क्रिएटिंग वैक्यूम बाय क्लोजिंग valve नॉट पचाची क्वेश्चन ले नॉट पचाची तो क्रिएटिंग वैक्यूम बाय क्लोजिंग valve that was not a remedial measure बाकी सब देखो टाइटन माउंटिंग स्ट्रैप्स टू होल्ड पाइप्स इन प्लेस पाइप को टाइट रखिबो इंस्टॉलिंग वाटर हमर आरेस्टर्स ड्रेन योर पाइप्स एंड रिफिल देम टू क्रिएट न्यू एयर चेंबर्स बाकी सब होज कोन रेमेडियल मेजर किंतु एटा होज नॉट ए रेमेडियल मेजर तो समर जो सैचुरेटेड टा ଟିକେ ବତେଇବେ सैचुरेटेड माने वॉइड्स रे टोटल पानी माने सब वॉइड्स रे पानी थिबो माने जस्ट पानी फिल हेकी अछि जस्ट पानी फिल हेकी अछि माने गोटे ड्रेस रे
गोटे ड्रेस रे जो तुम पानी ठोपा पकेबो सी जो स्प्रेड हुए दैट इज योर सैचुरेटेड बट ड्रेस टा जब बाल्टी भितर पकेदबो दैट इज योर सबमर्ज केस बुझ पाइलो सेमिति सॉइल रे जदी ओदा होउची दैट इज योर सैचुरेटेड माने एयर गुडा बाहर के जाउची एयर जगह रे पानी पसुची दैट इज योर सैचुरेटेड जदी से सॉइल रे पूरा पानी रे बुड़ी की रहिला माने वॉइड्स पानी रे फिल फेला परे भी पानी अछि ताको हम कहबा सबमर्ज केस सम 59 the water cement ratio is given by weight of the water to weight of the water to weight of the cement water cement ratio weight of the water to weight of the cement 60 which of the following statement is incorrect एमान भितर कोटा भूल देइचे ऑप्शन देखि लागो जेटा नॉइज पोल्यूशन the sound pressure is expressed on a logarithmic scale incorrect पचाची ए जिनसरा सो मार्क करतो नले क्वेश्चन भूल भाल लेजियो साउंड प्रेशर तो ठीक अछि where q होची d होची measurements of the sound pressure on logarithmic scales are called levels ठीक अछि ऑप्शन ए कहूची the sound pressure of the faintest fastest sound that can be heard by a normal healthy individual is about 10 micropascal एटा ठीक कि भूल केते हमें सुनी परिबा केते हमें सुनी परिबा 20 हर्ज 20 सुनी परिबा से को जो 10 माइक्रोपास्कल हमें सुनी परिबा भूल in which type of seasoning in timber immersed in a 10 solution of sweet माइक्रोपास्कल माने 10 हर्ट्ज hertz होचे frequency माइक्रो पास्कल माइक्रो होचे 10 to the power minus 6 पास्कल होचे कोन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर साउंड प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हर्ट्ज होची कोन सेकंड रे आसीबो हर्ट्ज होची सेकंड रे आसीबो हर्ट्ज माने फ्रीक्वेंसी रो यूनिट दैट इज योर 1 by टाइम पीरियड 1 by सेकंड दैट इज योर हर्ट्ज हमें एक्चुअली सुनि पारंते 1 डेसिबल साउंड साउंड को मेजर करिवार सिस्टम माने यूनिट होची दैट इज योर डेसिबल 1 डेसिबल ता सहित बराबर हेता जो फेंटेस्ट साउंड देइजे दैट इज योर बराबर 1 डेसिबल जोटा हमें सुनि परिबा 10 माइक्रो पास्कल हमें सुनि परिबा 61 in which type of seasoning timber immersed in a solution कोटा एटा सॉल्यूशन माने केमिकल सॉल्यूशन माने केमिकल हैला एएससी हमर एथिरे एएससीयू ट्रीटमेंट आर्सेनिक आ कॉपर ट्रीटमेंट क्वेश्चन में पचारे आर्सेनिक आ कॉपर फुल फॉर्म गुलो पचारे एएससीयू ट्रीटमेंट कोन आबेल्स प्रोसेस कोन सोडियम sodium clay can be used in the core of earthen dams because it has sodium ଆମେ जो लूण यदि ऐड करबा देन कोन हेइ थाए Low परमेबिलिटी को permeability. रिड्यूस कर दबो लो परमेबिलिटी प्लाईवुड 90 डिग्री 63 90 degree. 90 डिग्री यूनिफॉर्म टेंसाइल स्ट्रेंथ कैलकुलेट बल्क मॉडुलस देछि बल्क मॉडुलस बाहर करे पे देछि स्ट्रेन तुमको दे देछि स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन देछि 0.05 स्ट्रेन इन y डायरेक्शन देछि 0.10 स्ट्रेन इन z डायरेक्शन देछि 0.10 हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस एक्टिंग बल्क मॉडुलस माने k ର वैल्यू पचाछि k ର फॉर्मूला कोन स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन P upon वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यदि EX देछि EY देछि EZ देछि तो हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन काढी परिबे कि नै स्ट्रेस तो ऑलरेडी हमको देछि क्वेश्चन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन केमिन बाहर करियो हमको x डायरेक्शन y डायरेक्शन और z डायरेक्शन ले स्ट्रेन हमको जाना अछि तो हाउ टू कैलकुलेट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन
तीनटा को मिसई दबो कौन एथिरे अछि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू Ex प्लस Ey प्लस Ez तीनटा को मिसई दबो 0.05 प्लस 0.10 प्लस 0.10 10 10 20 5 25 0.25 वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पाइगला 0.25 तापरे बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस देज केते 25 डिवाइड बाय 0.25 हां Which process 65 which process of cement manufacturing is commonly used in modern cement plant modern cement plant रे में कौन कौन थे ड्राई प्रोसेस जदि पानी मिसेबो देन सेटा को स्लरी तयारी होबो मॉडर्न सीमेंट प्लांट रे हम यूज करते ड्राई प्रोसेस आ नॉर्मली हम जो घरे तयारी करते दैट इज जो घर फर तयारी कला बेले जो नॉर्मली तयारी करते जो कौन कहते सेटा हो सीमेंट मिक्सिंग जिमिता पानी मिसेबा जेतबे सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करबा लाइमस्टोन और सैंडस्टोन को 3:1 अनुपात रे मिसे के ग्राइंडिंग करबा से जो ग्राइंडिंग करबा गोटे होचे ड्राई प्रोसेस और होचे वेट प्रोसेस माने मेटेरियल्स मान सहित पानी मिसे के गोटे स्लरी तयारी करा जाय क्लीन को जिबा पूर्वरु सेते अधिका एनर्जी लागिवो सेते पई इंडस्ट्री मानन करे ट्राई करंते बेसी यूज करा जाय ड्राई प्रोसेस 66 The fineness of a cement sample is determined by using dash method. Fineness माने bench air permeability बा sieve 90 micron लो sieve नहले यूज कर परिबो bench air permeability apparatus bench air permeability apparatus अनुसारे OPC ordinary Portland cement surface area केते रहबा दरकार 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम और PPC रो 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम Rapid hardening cement रो 3250 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम surface area 67 In regard to the resection method of plane table survey, the term resector हमें काहा को कहबा स्टेशन पॉइंट रिलोकेट माने स्टेशन पॉइंट को हमें लोकेट करबा विथ रिस्पेक्ट टू another point माने जोटा ऑलरेडी प्लॉटेड हेकी थिबो ताको हमें कहबा रिसेक्शन rays drawn from unplotted location of a station to the known location of points ताको हमें कहबा resector 2 point problem 3 point problem 68 According to Newton's law of viscosity, shear stress of a fluid element is directly proportional to the rate of shear strain. Newton's law of viscosity. How does the age of concrete affect its compressive strength? Consider the age limit at 28 days with continued curing. कौन हबो? जेते जेते एज हबो सेते सेते कौन हबो सीमेंट स्ट्रेंथ बढ़िबो कि नै सेते सेते बढ़ी जिवो Option A. Option is compressive strength increases as the age concrete increases. 70. A diamond intersection on a road type is a diamond intersection. ता कौन? Grade separated intersection. Option C. 71 कोची which of the following statement is incorrect? ये एमान को जोतिर भूल. In plain sedimentation tanks, the removal of particles is independent of depth. वो फास्ट ठीक अछि भूल अछि. Independent of depth ना depth नहीं. ठीक अछि सर ठीक अछि ताले भूल कोडा कोतले एक्टिवेटेड कार्बन इज ए डीक्लोरिनेटिंग एजेंट ऑप्शन डी भी ठीक अछि ताले बी सी भी गोटे भूल सी कोन कहउछु प्रॉपुलेशन इज ए केमिकल टेक्निक दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डिस्टेबिलाइजेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एरा ठीक की भूल भूल अछि प्रॉपुलेशन माने जोड़ीबा ना कि डिस्टेबिलाइजेशन करिया डिस्टेबिलाइजेशन माने कोन भांगीबा प्रॉपुलेशन माने जोड़ीबा हैला माने बड़ बड़ कोआगुलेशन ऐड करिकी ताको छोट छोट को मिसै कि बड़ बड़ पार्टिकल तयारी करबा सो दैट कि से माने सेडिमेंटेशन करिवे तो सीटा भूल अछि 72 which of the following test is commonly used to measure softening point पई कोन यूज करते रिंग एंड बॉल flash point पई Penske apparatus Penske machine what are the two types of energy recovery process कौन कौन
एक्सोथर्मिक नहीं, एक्सोथर्मिक Combustion माने and हीट pyrolysis. बाहरिबे, Option D. combustion and pyrolysis, बायोमेडिकल वेस्ट यूज करबे। ए कंपाउंड पाइप लाइन कंसिस्ट ऑफ टू पीसेस जहार डायमीटर देछि सेम फ्रिक्शन फैक्टर, पाइप लाइन L1 होछि लेंथ व्हेन पाइप्स कनेक्टेड इन सीरीज, पाइप कनेक्टेड इन सीरीज रे कनेक्शन अछन, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द इक्विवेलेंट लेंथ रो रेशियो केते पचारि। पाइप्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज रे यदि कनेक्शन अछंती देन कोन सीरीज कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन, एटा होछि सीरीज कनेक्शन, ऊपरटा होछि पैरेलल कनेक्शन। कौन फरक को सीरीज कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन में कौन फरक? सीरीज कनेक्शन ले किए सेम रहइबो, पैरेलल कनेक्शन ले किए सेम रहइबो? दीटा पाइप अछि, सपोज इंडिविजुअल लेंथ हला L, तले टोटल लेंथ केते हे जिवो इक्विवेलेंट लेंथ दैट इज हे जिवो केते कैपिटल L, इंडिविजुअल लेंथ जणकर होछि L आ जणकर L हला, तले टोटल लेंथ केते हे जिवो फर्स्ट केस रे इक्विवेलेंट लेंथ दैट इज L1, L1 केते हे जिवो 12 हे जिवो, 12 जदी ହେଇଯିବ। L1 केते हे जिवो 12 हे जिवो हला, गोटे अछि सीरीज रे आउट अछि पैरेलल ले अछि। L2 कोन हे जिवो पैरेलल ले अछि, पैरेलल कनेक्शन माने कोन हे जिवो देखो, पैरेलल कनेक्शन माने HF is equal to FLV square by 2GD हला। तो पैरेलल कनेक्शन माने 1 by L2 इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ पैरेलल पाइप जदि हम देखिबा, आइडेंटिकल पाइप जदि पैरेलल रे रहिबे 1 by L2 रो रूट ओवर इज इक्वल टू हे जो 1 by L रूट ओवर प्लस 1 by L रूट ओवर, एठो हम पाइबा 1 by L2 इज इक्वल टू 4 by L। तो से हम पचाची L1 by L2 रो रेशियो केते हे जिवे, ताले L1 केते पाइले हमें 12 पाइले, L2 केते पाइले L by 4 पाइले, 8:1. ताले L1 by L2 रेशियो केते हे जिवो L L कटि गला 8 हे जिवो 8:1। 75 which of the following methods is used for designing a turnout taking off from a straight railway track, straight railway track को turnout पे हमें कौन डिजाइन करना? Coles method. कोल्स मेथड, बाकी सब तो नहीं, वेस्टरगार्ड नहीं, कुलम्ब्स नहीं, बाकी सब सॉइल पे गोटे अछि न जानथिले भी तुम एटा आंसर कर पातले। वेस्टरगार्ड टा मन पड़ुन। वेस्टरगार्ड होछि स्ट्रेसेस इन वर्टिकल स्ट्रेसेस इन सॉइल, बॉसिनेक्स थ्योरी वेस्टरगार्ड थ्योरी। कुलम्ब्स होछि सीओ स्ट्रेंथ होछि, रैंकाइन होछि कोठी रिटर्निंग वाले अछि, ये सब ट्रायंगल ए बी डी टा होछि सॉइल ले गोटे मेथड बढिला रेलवे पे। इन स्टील एंड आयरन वर्क डायमेंशन, स्टील एंड आयरन वर्क पे डायमेंशन केते 0.001 1. 77 in the estimation of minimum radius of horizontal circular curve on non-urban highways using the equation r is equal to v square by g, जोड़ा में यूज करंती e plus f is equal to v square by 127 r, सेटे से कोचे f टा कौन? friction, कोएफिशिएंट coefficient ऑफ of the friction between vehicle tires and pavement, option c। Again. horizontal curve रे आसीबो को friction lateral friction लेटर 0.15, आउ जेतला हम सीधा जाउतबा एसएसडी कैलकुलेशन में को फ्रिक्शन आसीबो लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन 0.35। 78 which of the given option represents a doubly reinforced beam, माने भितरु कोटा होची गोटे doubly reinforced beam, कोटा होची के Option C, sir. At least single layer of reinforcement. कंप्रेशन रहइबो टेंशन रहइबो एटलीस्ट सिंगल लेयर, ऑप्शन सी।
कंप्रेशन भी रहइबो रेनफोर्समेंट, टेंशन भी रहइबो रेनफोर्समेंट। जो हम डेप्थ अधिका दरकार पड़े, डेप्थ कम रखी के हमें डबल रेनफोर्समेंट दे देबा। assertion कहूजे ड्यू टू द inherent nature of various parameters involved in the process, the yield from a catchment is a random variable. Yield from a catchment होचे गोटे random variable हैला। yield कहाँ पर डिपेंड करे? इनफिल्ट्रेशन पर डिपेंड करिवो, प्रेसिपिटेशन पर डिपेंड करिवो, इवापोरेशन पर डिपेंड करिवो, ट्रांसपिरेशन पर डिपेंड करिवो। ताले को assertion टा ठीक अछि भूल अछि? से कहूची yield of a catchment is a random variable। ठीक अछि, प्रेसिपिटेशन आम हाथ रे नै, वेरिएबल गोटे। रीजन कहूची द yield from a catchment is the end product of various process। yield of a catchment is the end product माने केते हमर धान हैला सेटा होची गोटे end product। सेति पई हमर सेटा डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स ऊपर वेरी करे। कारण जे पर्यंत हमर धान न बाहरी छि, एति क्विंटल धान एथर बाहरला, केबे हम पाइबा? ड्यूरिंग द क्रॉपिंग पीरियड बा ड्यूरिंग द बेस पीरियड केते प्रेसिपिटेशन हला, केते इनफिल्ट्रेशन हला, सब ऊपर डिपेंड करिवो कि नै? तले assertion भी ठीक अछि, रीजन भी ठीक अछि। आ रीजन होचे करेक्ट एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट कहूची कि नेचुरल ऊपर डिपेंड करिवो, सेकंड कहूची कि जेहेतु एटा होचे ଗୋଟେ एंड प्रोडक्ट, तो ता भितर ऑब्वियसली जति कि ता भितर सब प्रेसिपिटेशन आसीबो, इनफिल्ट्रेशन आसीबो, समस्त ऊपर डिपेंड करे। both assertion and reason are true, option C। 80 in case of unavailability of space providing development length in the RCC beam, which option shall not be used to satisfy the criteria of development length? 4 बार यार Yes, chairs देखिछो कोड दिया जाए, स्लैब तळे स्लैब तो दिया जाए। 81 what does the following traffic signal, एटा कोन कहउछ? एटा तो नॉर्मल नैरो ब्रिज नैरो ने, ब्रिज ऑप्शन बहुत इजी कर देला। एटा आउट नैरो ब्रिज दे देला इजीली ऑप्शन। सिंकिंग फंड खाली फार्मूला पचारची, कौन फार्मूला? s into I by 1 plus I to the power n minus 1। बी s into I by 1 plus I to the power n, 1 plus सर n to तो the power I ऑप्शन को नाही देली, किछि सेमति। सर बी एटा बी हबा कथा 1 plus एक्चुअल हबा कथा s into I by 1 plus I to the power n minus 1। आज्ञा सही to the power n कोथरे अछि? ए रे अछि एरे एरे एटा गलो बट एटी s दे दीची, एटी s एटी n दे दीची, एरे एटा बेस मार्क टाइपिंग मिस्टेक। Which of the following is used as a finishing coat for surfaces of X-ray room? X-ray room ପାଇଁ ମାନେ ଯେମିତି ରେଡିଏସନ ବାହାରକୁ ନ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ ୟୁଜ କରନ୍ତି? ବେରିୟମ ପ୍ଲାଷ୍ଟର। वेरियम क्लस्टर ଜଣା ନଥିବ ନ୍ୟୁ ଜିନିଷ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ସ ରଖିବେ। ବେରିୟମ ପ୍ଲାଷ୍ଟର। Which of the following is not a warning sign? ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ warning sign ନୁହେଁ? warning sign କିଏ କଣ କଣ? ମାନେ ଯେମିତି ସ୍କୁଲ ଅଛି, କାମ ଚାଲିଛି, that is your warning sign। ତ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ warning sign, men at work ହଉଛି warning sign ହେଲା। truck prohibited ଏଟା ଗୋଟେ warning sign। 4 4 5 4 5 no stopping not a warning sign, pedestrian person also warning sign। 4 5 85 which of the following reinforced concrete structure is commonly used to keep the earth in vertical and stable position at location where the ground level changes abruptly? रिटेनिंग earth वॉल को stable position रे रखिया पई एज ए बैकफिल हिसाब रे हम यूज करते रिटेनिंग वॉल। ये तो इजी क्वेश्चन।
वन वे स्लैब माने कौन ग्रेटर देन 2 ना लेस देन 2 less than 2. लेस देन 2 greater than वन वे स्लैब माने गोटे Sir, portion 2 बड़ is रहइबो greater than 2. टू वे स्लैब माने बराबर रहइबो तो वन वे स्लैब माने गोटे लेंथ को जे कंपेयर करिवो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आसी Shear. वन वे बा गोटे डायरेक्शन में बेंड करिवो माने गोटे लेंथ ता बहुत लंबा रहइबो तो तार रेशियो टा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आसी हाँ. which of the given condition is ensured in RC members due to the proper bond between reinforcing steel and surrounding concrete. Strain compatibility. दी जंगर strain simultaneous हवा दरकार दी जंगर alpha same. Next question. Consider the following statements. कोटा 87 का strain compatibility reinforced cement reinforced concrete member रे जो स्टील आमर जेतिकी स्ट्रेन आसीबो बा जेतिकी थर्मल कोएफिशिएंट वेरिएशन देखेबो कंक्रीट भी सेतिकी देखेबो सेति हम स्ट्रक्चर टा कोन दुए सेफ हुए दैट इज योर स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी स्ट्रेन डायग्राम इज लिनियर consider the following statements with respect to cubical content सर से method वन वे स्लैब तार आंसर कोन हला one way slab greater than equal to 2 option C टू वे स्लैब हेले लेस देन वन वे माने गोटे डायरेक्शन ले बेंड करियो माने गोटे लेंथ टा बहुत बड़ थिबो तो गोटे बहुत बड़ अछि डिवाइडेड बाय छोट ऑब्वियसली 2 रु अधिक आसीयो लेकिन इक्वल टू 2 वन वे ताको हम कहंतु वन वे टू वे माने दीटा डायरेक्शन ले बेंड करियो माने दीटा को बराबर लेंथ थिबो रेशियो लेस देन 2 सर आसी तो लेस देन 2 ग्रेटर देन 2 तो नहीं ऑप्शन ऑप्शन सी अछि ना ग्रेटर देन आगे आगे Equal to. cubical content method cubical content method टा कोन this is an preliminary estimate this is an approximate estimate which of the following option is true preliminary estimate approximate both estimate true both the statements are both true true preliminary जोटा approximate statement rough भी ताको ही कर दे what is the interval at which expansion and contraction joints provided in India for smooth interface laid in winter 50 to केते 60 meters 50 to 60 meters 50 to new 60 data materials softness maximum joint of spacing in meter 50 to 60 meter ଆଉ ଯଦି rough ହେଲା 140 सर एटा सीजन वाइज एटा अलगा अलगा रखा हुए कोन भाई सीजन वाइज भेरी करिवो कारण टेंशन और कंप्रेशन चेंज हो जाए अकॉर्डिंग टू योर सीजन हम पेमेंट डिजाइन ले स्ट्रेस कांसेप्ट से एई जिंस थिबो पेमेंट डिजाइन ले स्ट्रेस कांसेप्ट सेठी जो क्रिटिकल स्ट्रेस आसे सीजन गोटे थाए कोन गोटे था फ्रिक्शनल स्ट्रेस और था वार्पिंग स्ट्रेस माने पड़छि फ्रिक्शनल स्ट्रेस वार्पिंग स्ट्रेस सीजनल पाई जो वेरी करिवो विंटर सीजन समर सीजन पाई अलग अलग स्ट्रेस आसीबो कारण टॉप लेयर बॉटम लेयर रो कंप्रेशन और टेंशन चेंज हो जिवो 90 during the alignment of a road by using direct ranging the surveyor raises both the hands above his head and then brings them down as a signal for his assistant the correct action taken by assistant would be दीटा हाथ से ऊपर को टेकिना ता माने कोन करेक्ट पोजीशन ता माने रेंजिंग डॉट टा ठीक जगह रे अछि हला जदी से लेफ्ट देखे था ताल टिके लेफ्ट को देता राइट देखे दिले टिके राइट को आंता दीटा हाथ ऊपर देखला माने जोटी अछि ठीक अछि considering the ranging rod is at correct position Surrender. 91 a tank has a height and width height ଦେଇଛି 4 width ଦେଲା 3 determine the total water force in kilonewton acting at the bottom of the water force माने rho g h बाहर करबा p is equal to rho g h then it is completely filled with water take the density of the water which 1000
G ଦେଇଛି 9.81 କାଢି ପାରିବ କଣ କରିପାରିବ pressure is equal to rho into G into H this is your pressure କିନ୍ତୁ ତମକୁ density ଦେଇ ଦେଇଛି kg per meter cube force ପଚାରିଛି ତାହେଲେ force is equal to କଣ ହେଇଯିବ rho into G into volume force कहाँ पे आसिबो weight पे आसिबो गामा इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम ए वेट टाइम होचे फोर्स वेट हे जिवो गामा इनटू वॉल्यूम गामा इज इक्वल टू रो इनटू जी इनटू वॉल्यूम रो देछि केते 1000 इनटू 9.81 इनटू वॉल्यूम केते हे जिवो टैंक रो वॉल्यूम केते हबो लेंथ जदि 3 मीटर हुए 3 इनटू 4 इनटू 3 दिस इज योर आंसर and to identify the incorrect statement with respect to specification on the partial safety factor for material strength and are used in limit state design incorrect कोडा पचारछि कोडा incorrect partial safety factor 1.5 is used for concrete ठीक अछि बोल अछि ultimate ପାଇଁ ठीक है ठीक अछि higher partial safety factor has been assigned to concrete compared to reinforcing steel under the ultimate state method ठीक अछि बोल अछि ठीक है सर ठीक अछि 1.5 1.15 ठीक अछि ताले CD भितर गोटे भूल D तो दिटा भूल भूल लागु जे ଅଛି। partial डी safety factor 1 C कोचे partial safety factor 1.15 is used for steel under serviceability limit D कोचे partial safety factor 1 is used for concrete under serviceability limit को कोडा ताल ठीक C D भितर गोटे भूल गोटे ठीक गोटे भूल डेटा भूल सर C टा भूल अछि D टा ठीक अछि सर्विस जदि अल्टीमेट केस कहता देन 1.5 किंतु एठी देइछि सर्विसेबिलिटी लिमिट ताले इन केस ऑफ द सर्विसेबिलिटी लिमिट कोड आसी सर्विस 1.5 होगा सर्विस सिलेंडर 1.15 टा कहा पई जो स्टील रो 1.15 टा कहा पई को क्राइटेरिया पई अल्टीमेट अल्टीमेट पई बो एठी कोन देइछि सर्विस सर्विसेबिलिटी अल्टीमेट तो सर्विसेबिलिटी कम आसीबो से कोच अल्टीमेट यदि 1.15 गला त सर्विसेबिलिटी ताटू कम आसीबा कत बट से कोच सर्विसेबिलिटी 1.15 दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट 93 select the incorrect statement regarding purification of water screening is done before screening तो होचे fast process screening is done before plain sedimentation ठीक अछि sedimentation added with coagulation is better than plain sedimentation B ठीक अछि plain sedimentation is also known as type 2 settling एटा ठीक कि भूल type 1 settling involves C भूल अछि सर 92 रो डी भी तो रॉन्ग अछि ना 92 रो D मैडम एठी लिखिछि सर्विसेबिलिटी ଯଦି ଅଲ୍ଟିମେଟ 1.5 ଆସେ ସର୍ଭିସେବିଲିଟି ର 1 ଆସିବ ତା ପାଇଁ ଦେଇଛି କଂକ୍ରିଟ କେସ୍ ସେଟା ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସି କହୁଛି ଅଲ୍ଟିମେଟ ଯଦି 1.15 ଆସେ ତାହେଲେ ସର୍ଭିସେବିଲିଟି ର ସେଇ 1.15 ଆସେ ତାହେଲେ ଏଟା ଭୁଲ ହେଲେ ଅଲ୍ଟିମେଟ ଯାହା ଆସିବ ସର୍ଭିସେବିଲିଟି ତାଠୁ ଟିକେ କମ ଆସିବ ସେଫ୍ଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏଠି ଷ୍ଟିଲ ଦେଇଛି ଏଠି କଂକ୍ରିଟ ଦେଇଛି ତ ଏଟା ଠିକ ଅଛି ଏଟା ଭୁଲ ଅଛି 94 What is the major function of a water distribution system? Water distribution system ର major function କଣ ପାଣି କୁ ନବ treatment plant ପାଖକୁ water distribution system treatment plant ରୁ ନବ ଘରକୁ provide କରିବ to carry water from source to pump house to carry water from treatment ଏଟା to carry option C to carry water from treatment to individual house ସମସ୍ତଙ୍କ individual ଘରକୁ ପାଣି provide କରିବ ଏଟା ହଉଛି main function 95 If a device consists of one inlet and one outlet and the volume flow rates at the inlet and the outlet are equal, then the flow through the device inlet जहाँ outlet से
यूनिफॉर्म इनलेट रे जहां आउटलेट रे सेया कौन देछि वॉल्यूम फ्लो रेट्स एट द इनलेट एंड द आउटलेट आर इक्वल देन फ्लो को हम कौन कहबो must be uniform ना must be laminar ना must be steady ना is not necessarily steady steady हमें कहा कहबा with respect to time जदी constant रहिला ताले एटा कोन हे जो not necessarily steady steady हेई पारे बट एमिति नाही कि steady हबो कारण with respect to time जदी vary कला इनलेट रे माने जोठी एंट्री करूची जति के बाहर छु सेति की ता माने न कि सेटा स्टेडी फ्लो हो गला स्टेडी माने with respect to time है ना तो may be steady may not be steady which of the following statement is true regarding the compensator used in an electronic theodolite compensator काम कौन इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट रे बा डिजिटल थियोडोलाइट रे बा ईडीएमआई जोटा कंपेनसेटर रो काम कौन जो वर्टिकल एक्सिस टिल्ट करिवो ताको से एडजस्ट करिवो सो दैट कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस परफेक्टली परपेंडिकुलर हो गए यदि परपेंडिकुलर हो नाही देन हमें ता कोन करबा डबल फेस रीडिंग नै कि रिमूव कर करी 97 the soil component with particles এটা কো ইজি क्वेश्चन सैंड 4.75 minus 9 कल्चरेबल सीसीआर फुल फॉर्म पचाज ना कौन कमांड एरिया कल्चरेबल कमांड एरिया कौन ग्रॉस कमांड एरिया minus क्रॉस कमांड एरिया ग्रॉस में कमांड एरिया माइनस ऑन कल्चरेबल एरिया D ग्रॉस कमांड एरिया माइनस ऑन कल्चरेबल एरिया दैट्स इज कल्चरेबल कमांड एरिया सीसीए 99 degree of static indeterminacy of a rigid jointed plane frame को फॉर्मूला यूज करिवो 3m plus r minus 3m plus r minus 3j m होची मेंबर्स r होची रिएक्शन dj jointed सब कुछ डाटा दे देछि 15 टा मेंबर देछि 45 रिएक्शन देछि केते तीनटा 45 माने 48 minus 42 6 is your answer चलो लास्ट क्वेश्चन को लास्ट क्वेश्चन इज आंसर करो B sir. समस्त आंसर करो when a series of wheel load crosses simply supported girder the maximum bending moment under any given wheel load Muller rescue principle by ILD रो concept moving load रो concept option B goes the center of span is midway between the center of gravity of the load system and B the wheel load under the consideration option A goes center of gravity of the load system midway between the center of the span and the wheel load ते कहूची when a series of wheel loads माने भाबिने गोटे गाड़ी आउ process a simply supported girder maximum bending moment under any given wheel load कोठी आसीबो जोठी center of the span is midway between center of gravity of the wheel load center of gravity of the wheel load system सेठी आसीबो maximum Muller rescue principle complete कार किसी क्वेश्चन डाउट होइला 99 टा टिके सर 99 रो आंसर केते हला सर 100 100 आंसर कौन 100 डाउट होइला आंसर कौन 100 हैला ऑप्शन बी हैला सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लोड सिस्टम यदि मिड वे हैला बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्पैन एंड द व्हील लोड एटा हो सेंटर ऑफ द स्पैन एटा हो सेंटर ऑफ स्पैन आउ सपोज व्हील लोड जोडी थिबो एटा हो व्हील लोड
तार सीजी सेठी हम पाइबा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट 99 99 6 है आंसर 3m प्लस r माइनस 3k ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି 15 45 प्लस 3 48 48 माइनस 42 6 Sir, 54 is 54 आपको हेलानी 54 होचे d10 पचारची 425 माइक्रोन देकी 50 ग्राम पास करूची ताले मते कहले परसेंटेज पासिंग केते हबो नेइथिले केते 500. 500 ग्राम ताले परसेंटेज पासिंग माने कोन केते पास कला बाई केते नेइथिले इनटू 100 शून्य 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 कटि गला 5 5 कटि गला केते भाला 10% भाला ताले जो सिव साइज देकी 10% फाइनर पाइले सेही सिव साइज को हमें कौन कहबा D10 क्वेश्चन में पचाची इफेक्टिव साइज केते D10 को हमें कौन कहंती इफेक्टिव साइज कंप्लीट Sir, चलो थैंक यू डिवीजन क्लास चलची